Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताज़ा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं, साथ ही नज़र डालते हैं प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर, और खबरों की बारीकियों पर भी हम चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर उपलब्ध होंगे। अविनाश, आपका मार्केट मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। Good evening. Good evening. And now let's begin today's edition of Market Mantra with the headlines in English. Thank you, Harsh. Key domestic indices end flat in the second consecutive session. Asian and European markets decline amid weak global sentiments. And oil prices remain under pressure, slip further on concern over waning demand in the United States and China. कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच आज भारतीय शेयर बाजारों में कोई खास उत्साह नहीं दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार दूसरे दिन सपाट रहे। एशियाई और यूरोपीय बाजारों में भी कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच गिरावट, और कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें दबाव में। अमेरिका और चीन द्वारा मांग कम होने से कीमतें और गिरी। भारतीय शेयर बाजारों के लिए आज सप्ताह का तीसरा सत्र था, लेकिन आज भी कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजारों में कोई खास उत्साह नहीं दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी लगभग सपाट रहे, हालांकि थोड़ी सी इसमें बहुत मामूली बढ़ोतरी रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 33 अंक बढ़ा, 64,976 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 37 अंक की मजबूती रही और ये 19,444 पर रहा। विस्तारित बाजार में बीएसई मिड कैप 0.78% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप में 0.6% की मजबूती आई। 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 14 शेयर आज बढ़े, जबकि 16 शेयरों में गिरावट रही है। Key domestic indices ended on a flat note today in a subdued trading session as Sensex and Nifty displayed minimum movement amid negative global cues. In the second session in a row, market participants seemed to be awaiting clearer signals before taking substantial positions. The Sensex ended 33 points or 0.05% higher at 64,976, and the Nifty settled 37 points higher or 0.19% up to close at 19,444. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.78% and the small-cap index gained 0.60%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 14 companies appreciated, while those of 16 companies ended in red. Asian Paints climbed 2%, Titan, Larsen & Toubro and JSW Steel rose 1.2% each. ITC rose 1%. On the other side, ICICI Bank declined 1.4%, NTPC fell 1.1% and Infosys lost 0.9%. In the sectoral indices at the BSE, 15 sectors ended in green while 5 sectors closed in red. The realty sector gained 1.4%, service index rose 1.1% and the metal sector added 1%. Industrial and healthcare sectors added 0.9% each. On the other hand, BankX and tech sectors lost 0.3% each. Telecommunication declined 0.2%. The overall market breadth was positive as shares of 2,019 companies appreciated, while those of 1,683 companies declined. A total of 126 shares remained unchanged. Avinash, we see almost a flat, slight increase. Of course, the markets closed with a slightly in the greener zone. But yesterday, there
markets were ended in red, and the day before we saw sizable increase in the markets. So what do you attribute this volatility to? No, I think, see, my guess is that before Diwali there has been some preempt buying due to the festive kind of mood in the market. But if you look at the FII positions, the FII still continue to be net sellers in the market, and I think this month is going to be a very volatile month. After the 15th or 16th of November, the markets would start discounting, the results of the state elections. There are 5 state elections going to be held in November, and I think Madhya Pradesh and Rajasthan are very crucial. So markets are obviously now getting a little bit jittery, and possibly after a good rally in the markets are now cautiously awaiting the state elections, which the results which are expected in the first week of December. So I think some amount of caution in the market is getting in, although not in the entire proportion. And of course, earnings have been much better than expectations. We've been seeing very medium to small size companies putting up Q2 numbers which are much ahead of the street expectations. So I think all in all, I think markets are now in a wait and watch mode, and obviously that is one of the reasons you're going to see the index moving up little slowly, and obviously whatever comes on the election side is going to be clearly monitored by the government, and thereafter you could see the markets rallying hopefully on the results which finally come out in the first week of December. Now, wait and watch mode that you say just now talked about, you're talking about the domestic factors, but is that wait and watch mode that you're talking about also extending to the fact that US Fed Chairman Jerome Powell is later today in the our India time later today is going to address a conference in Washington DC, and all investors as well as market watchers, they're all looking to him to make out what the going forward, what the US Fed's policy would be regarding interest rates. No, exactly. See, basically, one thing is very clear, that inflation in US still continues to be quite high and above the comfort level of the Fed. So I think for some more time, you're going to see interest rates continue to be elevated, and there is unlikely any possibility, at least for the next 1 to 2 quarters, interest rates to come down. I think now the Fed commentary is very important, data points are very important. So unless and until we see a softening in inflation numbers, the commentary is going to remain pretty hawkish. So that is something which markets should also discount. But broadly, I don't think immediately there could be any interest rate hike, because markets are also of the view that beyond a particular level, raising interest rates will not yield the desired result. So we'll have to wait for another 1 or 2 quarters. But till then, I think the commentary is going to be cautious and hawkish. So this is also another factor which is obviously playing out on emerging markets like India. और अविनाश, आपने बताया कि एफपीआईज लगातार नेट सेलर्स बने हुए हैं. ऐसे में अगर फेड और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है टू बीट दैट इन्फ्लेशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, तो ऐसे में एफपीआईज के और सेल होने से सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्स में और कितना गिरावट आप देख रहे हैं आने वाले 3-4 हफ्तों में? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना ये मार्केट ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्काउंट किया है. और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि यहाँ पे जब तक आरबीआई भी कोई सॉफ्टनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स की बातें नहीं करता है, तब तक मार्केट्स वोलेटाइल रहेंगे. इनफैक्ट अभी तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफी मजबूत है. एसआईपी का करीबन 15-16 हजार करोड़ हर महीना पैसा बाजार में आ रहा है. लेकिन डेफिनेटली एफआईएस का सबसे बड़ा जो यूनिट होता है, जो पैरामीटर वो देखते हैं, वो करेंसी को लेके होते हैं. देखिए, इंडियन रुपी वीक हो रहा है, डॉलर सरेंडर हो रहा है, तो नया डॉलर्स इंडिया में इसलिए नहीं आ रहे. और दूसरी बात, बॉन्ड यील्ड्स यूएस मार्केट में करीबन 5% को टच करने के बाद अभी भी काफी एलिवेटेड है, करीबन 4.7-4.8%. तो ऐसे माहौल में पैसा इतना जल्दी नहीं आएगा. आपको शायद 2-3 महीना या 3-6 महीना वेट करना पड़े जब तक एफआईएस का अप ट्रेंड चले. और मार्केट में मुझे लग रहा है कि जो बिकवाली 2-3 हफ्ते पहले हुई थी, उस तरह की बिकवाली नहीं होगी. बट हाँ, मार्केट्स ये लेवल पे शायद कंसोलिडेट होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है. अविनाश, बाजार इस समय दबाव में है, थोड़ी गिरावट है. इसको एक चुनौती न मानते हुए क्या आम निवेशक इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकता है कि अच्छे स्टॉक्स में, या जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, अच्छी कंपनियां हैं या अच्छे सेक्टर्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करें? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, अगर आप एम्पेरिकल एविडेंस देखोगे तो 6
6 महीने के पहले जब जनरल इलेक्शंस के पहले हमने डेटा देखा है, तो हमने देखा है कि तभी बाजार कम से कम 10, 15 या 20% बढ़ता है, और पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का है, कोई भी निवेशक अगर 1.5-2 साल का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसको ये 6 महीने की वॉलेटिलिटी से कोई डरना नहीं चाहिए। अच्छी ब्लू चिप कंपनी जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मौके मिलेंगे, लेकिन आपको नजरिया थोड़ा 1.5-2 साल रखना है, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बहुत होगी, वो रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। जी, coming to the wider markets, Avinash, the fact of the matter is that the IMF has recently, just yesterday, it came out and upgraded China's GDP growth forecast, and saying that the Chinese economy is set to grow 5.4% in 2023. So, do you think that is good for the global economy, because China is, considered as the world's factory, and anything that comes out of China, if China performs well, it has a direct impact on the world economy, which in turn obviously has an impact on the markets as well. No, I think this is definitely good news, but we require certain more confirmations to ensure that China really has now shown some sort of a recovery. Even today, the Chinese economy is in a severe problem. As far as the metal sector is concerned, we see that globally metal prices are still weak, and China has been a very big buyer there. So I would believe that despite the fact that this announcement has come in, maybe another 1 or 2 quarters, one will like to see concrete data points coming in, and then only we could reasonably say that, obviously if China performs, the global economy will also take off, because a large amount of demand compression has happened because of the underperformance of the Chinese economy. So I would prefer to wait and watch. I mean, it's too early to say that everything is okay and things are going to get back to normal in a very fast way. It might take at least 3 to 6 months before we see normalcy, from China. Coming back to the Indian markets, now today, of course, like we said, that we saw that the markets closed slightly higher in the green zone, but the broader market has outperformed the main two indices. The BSE Mid Cap Index rose 0.78% and the Small Cap Index gained 0.60%. How do you view this? I think clearly, the small cap and the mid cap stocks have done much better, considering, if you look at the large cap stocks. So I think, banks like SDFC, Kotak Bank have actually not delivered those kind of returns what the broader market or the small cap and the mid cap stocks have done. And I think investors are very clear that they are basically looking at generating absolute alpha generation in companies, and that is only possible in smaller size mid cap companies. Although the risk remains high, there's been a large amount of broader participation from large institutional, kind of investors like funds, PMSs, AIFs. So I think that is also giving a lot of stability to the broader market rally. So I think this will continue for some time, because as I mentioned in my earlier address to you, that the quarterly numbers which have come out by smaller mid cap, by larger small companies is much better than what the street expected. So, to that extent, this rally is supported. But you'll have to take a stock specific case here. It cannot be a kind of a general statement. But yes, companies which are doing well, where the business commentary is strong, where the sustainability of earnings is expected over the next 6-12 months, I think that would be an area where a lot of further re-rating is possible. So, this rally will continue in the broader market. और अविनाश, आप अभी डॉलर के मजबूत होने, रुपए के थोड़े कमज़ोर होने की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ कम आ पा रहा है डॉलर। तो हम बात करेंगे कि विदेशी मुद्रा बाजार में आज जो डॉलर की कीमत रही, $1 की, वो 83 रुपये 28 पैसे रही, और डॉलर इंडेक्स आज 0.26% की तेज़ी के साथ दिन के कारोबार के समय 105.82 पर था। और साथ ही हम बात कर लें एशियन मार्केट्स की, कि एशियाई बाज़ारों में क्या हाल रहा। अमेरिका में, जैसा कि अभी हम अनुभा के साथ चर्चा कर रहे थे, फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाए जाने की संभावनाओं के मद्देनज़र एशियाई बाज़ारों में गिरावट रही। सिंगापुर बाज़ार का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.4% गिरा, जबकि दक्षिण कोरियाई बाज़ार के कॉस्पी में 0.9% की गिरावट रही है। हांगकांग बाजार का हैंगसेंग 0.6% गिरा, और जापान का निक्केई सूचकांक 0.3% कमजोर हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 0.2% की गिरावट रही है। यूरोपीय बाजारों की बात करेंगे, वहां भी गिरावट देखी जा रही है। दिन के कारोबार के समय जर्मनी का डैक्स 0.4% की कमजोरी पर था, जबकि लंदन का FTSE 100 0.2% की गिरावट पर था। फ्रांस के कैक 40 में भी 0.1% की मामूली गिरावट रही है।
Moving on to the US markets, US stocks rose yesterday as a retreat in US Treasury yields buoyed mega cap growth stocks while investors sought more clarity on interest rates from the Federal Reserve. The S&P 500 and Nasdaq notched their longest streak of gains in 2 years. The Nasdaq Composite Index surged 0.9%, the S&P 500 gained 0.5%, and the Dow Jones Industrial Average rose 0.2%. Abhinash, as we were just discussing right now a little while ago, that Jerome Powell is to address a conference, and all eyes are going to be on, on what he's going to say regarding the future course of action regarding the interest rate hikes. What is your expectation that in the not immediate, but in the coming 6 months, in the next quarter, or in the next coming 6 months, what is the direction that the US Fed is likely to take? No, I think very clearly, interest rates seem to be peaking out, and I think in the next, say, 3 months, hopefully if inflation comes down, then I think the commentary from Mr. Powell will be very dovish. Last time, he very clearly mentioned that, most of the members were of the view that raising further interest rates will not, yield the desired result. So my guess is that maybe in December, we could see first signs of interest rate softening and possibly some signs of inflation coming down, and that could be a good sign. So I think in the next 3 to 6 months, hopefully the high interest rate regime may end and we could see better kind of interest rate cuts happening at the global level, and that could also obviously help RBI take a conscious decision that interest rates here also need to be cut down. So I'm quite optimistic, but we may have to wait till December. I was coming to the RBI, in fact, that taking a cue, or not necessarily taking a cue from what the US Fed does, but which direction do you see the RBI going? Because as per the experts, a lot of analysts are saying that the interest rate cuts are not likely to happen till at least the beginning of next year, or at least till February or March next year. I think my guess is finally, when interest rates start coming down is important, but when the first signal of softening of interest rates start, I think the markets will start discounting this much more in advance. And so maybe technically interest rates may start falling by March, but the real sign of any softening could possibly start, from January or February onwards. And that entirely depends on the inflation trajectory, on data points which would be monitored for the next 3 to 4 months. So I think clearly interest rates cuts to happen may take some time, but at least the markets would be happy that going forward interest rates may not be hiked significantly from the current level. So I think we'll have to wait till, say, Jan-Feb to get a clear sense as to how interest rates are going to move. बिल्कुल ठीक, क्योंकि अविनाश आरबीआई जो दूसरी चीज़ एक ज़रूर देख रहा होगा इस समय, हालांकि बहुत ही इस साल बैलेंस्ड अप्रोच रहा है आरबीआई का जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था टू बैलेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड काउंटर द इन्फ्लेशन। तो अभी भी वो देखेगा कि मार्च तक अगर ये कम किया जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ग्रोथ किस लेवल पे बढ़े और इन्फ्लेशन भी एक तरीके से नियंत्रण में रहे, जो भी इनका पैमाना है ±2, 4 के ऊपर या 4 के नीचे। नहीं, बिल्कुल, देखिए क्वालिटी ऑफ ग्रोथ और क्वांटम ऑफ ग्रोथ, ये दोनों चीजें आरबीआई देखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट को और गवर्नमेंट को भी पता है कि ग्रोथ को लेके कोई भी ऐसा कदम आरबीआई नहीं उठाएगा जिससे कि ग्रोथ में थोड़ी और प्रॉब्लम आ सकती है। अभी हम जीएसटी के नंबर अगर देखते हैं, कॉर्पोरेट कैपेक्स देखते हैं, तो अभी भी मैं समझता हूं कि पॉसिबिलिटी है कि जिस प्रकार का ग्रोथ नंबर हमको दिख रहा है, वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा और कट जाता है पॉसिबली जनवरी फरवरी के बाद, तो ये जो मोमेंटम है ग्रोथ का वो इससे भी अच्छा बेहतर देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से हमको 1-2 महीना और वेट करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली आरबीआई ये चाहेगा कि ग्रोथ कोई भी कॉस्ट पे कम ना हो। Avinash, we were talking about you have already told us that the markets are likely to be volatile in the next, coming quite some time now. In that, and Harsh was talking to you about the FPI's role, the way the FPIs are right now selling, they're net sellers. But in all this scenario, what do you see? How do you see the role of the DIIs, the way they're performing, the way they're buying? What do you see coming out of that area? No, see, the DIIs are clearly benefited now because as everyone is aware, the SIP number currently ranges around 16,000 crores every month. And this is a big amount of money. And obviously this has to be invested in stocks. They can't keep this cash idle. And that is why the broader market is seeing a very large amount of activity. See, most of the fund managers are now betting on the smaller
mid-cap companies, because that is where the alpha generation is going to be significant. The large cap also would do well, but the large caps have already priced out, and at these levels there is not significant kind of expectation that this money will actually yield very good returns over the next, say, 12 to 18 months. So I think a large part of that money is going in the broader market. And to that extent, the index will remain volatile, because the index consists of 30 shares and 50 shares. But the broader market is a bigger opportunity where the alpha making opportunity is very large. So I think you're going to see this kind of activity in the market for some more time. Index may not go anywhere, at least on the upside or on the downside. It will remain volatile. But stock-specific activity is something which will definitely play a prominent role, with most of the with domestic institutions, which are now almost every month they are flush with money and they are forced to invest into, stocks, which obviously they know which have to perform. जी अविनाश, आपने ये प्राइस्ड आउट की बात कही बिग शेयर्स के बारे में, बड़ी कंपनियों के शेयरों के बारे में. अभी जो मिड कैप या स्मॉल कैप में थोड़ी सी हमें ग्रोथ देखने को मिली है, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जिससे ज़्यादा निवेशक उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं. तो अभी क्या माने कि ये पीक लगभग कर चुका है या अभी पीक करना बाकी है? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए अभी भी पीक करना बाकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट जब फ्यूचर की बात करता है तो मार्केट FY24 सितंबर के बाद वो FY25 के अर्निंग्स फोरकास्ट करने लगता है. मार्केट बहुत आगे देखता है. तो अभी सितंबर का नंबर आ गया है तो सारे एनालिस्ट ऑब्वियसली FY24 का तो देखेंगे नहीं, वो अभी FY25 का आंकड़ा देखोगे और वहां पे पिक्चर काफी अच्छा लग रहा है. स्पेसिफिकली अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, कैपिटल गुड्स सेक्टर की बात करें, आपका बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की बात करें, उसके बाद ऑटोमोबाइल की बात करें, तो यहाँ पे डेफिनेटली देखिए ग्रोथ बढ़िया दिख रहा है अगले 6-8 महीने का. और उसलिए मुझे लग रहा है कि अभी भी पीक आउट तो बिल्कुल हुआ नहीं है, यहाँ पे अभी भी डिमांड अच्छी है. मार्केट डेफिनेटली सेंटिमेंटली और जो पॉलिटिकल जो भी नतीजा आएगा उससे थोड़ा in the near term होगा, but fundamentals अभी भी strong है. Moving on to commodities, oil prices remained under pressure today and slipped further on concern over waning demand in the United States and China. Earlier, oil prices declined to their lowest in more than 3 months in the previous session. In the intraday trade, Brent crude was trading at $81.07 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was trading at $76.80 per barrel when reports last came in. Avinash, how do you see the oil prices again, as with any other commodity, oil prices right now, especially given the geopolitical situation, the way things are panning out, oil prices are under pressure. We are seeing a lot of volatility, but at the same time, as I just said, that they've slipped to their lowest in 3 months. So on the one hand, we have IMF, which says that China is going to, they have upgraded the China growth rate. But on the other side, they have also warned about the Chinese real estate market. So mixed cues on Chinese economy. How do you see the oil prices? I think, today also one of the reasons for most of the oil marketing company stocks to move up was largely because of this reason that crude oil prices have touched a new low. They have been trading soft. But I think you must also understand the fact that if the Israel-Hamas war, continues beyond December, then I think that is definitely not a good sign for most of the crude oil-related companies, specifically the oil marketing companies, because that could clearly mean that Middle East also would now get further influenced in this Israel-Hamas war. So I think it's going to be a wait and watch for the next couple of months. Any activity on the Israel-Hamas war, any escalation in the activities of this war beyond December is definitely not a good sign. And if that happens, then I think you could see globally, crude oil prices jumping quite significantly. If, the war continues beyond December, Jan, that is definitely not a good sign, because that would actually increase the geopolitical pressure, on most of the Middle East countries. And do you think if at all, if the oil prices, remain under pressure and maybe, come down a little bit more, we can see some reaction, some action from the OPEC plus bloc, because right now they have already put a restriction, a cap on the production, which we may see that extending further? Yeah, definitely. I would believe that, if the oil prices continue to remain soft, it would definitely, on one side, apart from the restrictions, it would also help, the trade deficit for our country to be under manageable number, because even today, for India, the biggest import item is crude oil.
And obviously, if crude price comes down, then not only does it help, the trade deficit, it also helps us to generate a better GDP number. So I think clearly a softer crude is definitely a favorable input, but we'll have to wait and watch for the next, say, couple of months to see how the trend moves going forward. बिल्कुल। और अविनाश, थोड़े सोने और चांदी की कीमतों पर भी चर्चा कर लेते हैं। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने की कीमत आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 71 रुपये गिरी। इसके साथ ही 60,276 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रही है और चांदी की कीमत भी प्रति किलो 324 रुपये गिरी है और ये 70,310 पर आ गई। इधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दिन के कारोबार के समय सोना प्रति औंस $1,968 70 सेंट पर चल रहा था। चांदी की कीमत भी थोड़ी गिरावट के साथ $22.51 थी। अविनाश, आम तौर पे अगर शेयर मार्केट में थोड़ा झटका लगता है, थोड़ा गिरावट होती है थोड़ी, तो सोने की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन इधर सोना भी बहुत समय से देख रहे हैं कि स्टैटिक या तो बना हुआ है, कोई खास उछाल इसमें नहीं दिख रहा है जो पिछले साल दिख रहा था। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए गोल्ड के प्राइसेस नॉर्मली फेस्टिव मंथ जब होते हैं तभी काफी बढ़ने लगता है क्योंकि गोल्ड का कंजम्पशन, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि गोल्ड की कीमतें काफी बढ़ने के कारण जो गोल्ड ज्वेलरी सेगमेंट है, कॉइन्स है, ज्वेलरी है, वहां से भी डिमांड थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। मुझे लग रहा है कि देखिए गोल्ड की कीमत में ऐसा कुछ बड़ा उछाल आएगा इस साल, क्योंकि ब्रॉडली गोल्ड एक ऐसा है जहाँ पे हम रिस्क को हेज करते हैं, वहां से ग्रोथ कुछ नहीं आता और एक प्रोडक्टिव एसेट गोल्ड को हम नहीं मानते। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट कम से कम आने वाले 3 महीने में कोई बड़ी बढ़त गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी ऐसा लगता नहीं है। गोल्ड का जो ट्रेड का मूवमेंट है वो आपको इसी रेंज में कम से कम अगले 2-3 महीने देखने को मिलेगा। यहाँ से कोई अगर निवेश भी करता है तो कोई बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आएगा ऐसा लगता नहीं है। तो उसके विपरीत मुझे लग रहा है कि अगर इक्विटी में हम पैसा डालते हैं तो इक्विटी में शायद आपको अच्छे रिटर्न मिले। Avinash, the festive season has already begun. Dhanteras is the day after tomorrow, and the tradition is to buy gold on Dhanteras. So what is your recommendation? Should people go for physical gold, go for ETF or gold bonds? I think clearly, instead of going for physical gold, I think if anybody wants to buy a gold bond fund or maybe a gold ETF, that would be a better choice because frankly, this is also an asset class which should have a decent amount of liquidity. Liquidity is very good in either ETFs or gold bonds, and that would obviously ensure minimal cost for the participants. Physical gold, the biggest challenge is that when you go to sell it to a jeweler, he will deduct a big amount of expense as his commission, which obviously, reduces the returns from gold for the investor. So I think the digital side definitely will catch up, and I think a lot of investors are now looking forward for this medium where their returns are much better than physical gold. बिल्कुल, क्योंकि जब आप खरीदने भी जाते हैं फिजिकल फॉर्म में गोल्ड अविनाश, तो आपको जो मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, हाँ उसका अगर आप वैसे देखें कि आप पहन के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलिटी से इस्तेमाल है तो अलग बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल गोल्ड खरीदने की सलाह इन्वेस्टमेंट पॉइंट से तो आप नहीं देंगे, शायद कोई भी नहीं देता है। और अब एक सवाल जो हमारे कई श्रोता हमसे पूछते हैं, जैसा कि आपने कहा कि इक्विटी मार्केट में निवेश अभी बेहतर है अगर आपका टाइम होराइजन साल 2 साल का है तो। एक सेक्टर ऑटोमोबाइल की बात करें तो ऑटोमोबाइल में अभी हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं, उसमें सड़कों पर काफ़ी संख्या बढ़ रही है, बिक्री भी ग्रोथ हो रही है। आने वाले समय में सरकार की भी योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि पोल्यूशन कम हो। तो ऐसे में क्या जो ई व्हीकल्स हैं इन सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर के इन शेयरों में लगाना ठीक होगा? बैटरी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या जो मोटर बनाते हैं ऐसे कंपनियों में? बिल्कुल, देखिए मुझे लग रहा है कि सिलेक्टिव प्लेयर्स है, जैसे कि ग्रीव्स कॉटन है जो 2 व्हीलर प्रोडक्ट बनाती है, एथर। उसके बाद मैं समझता हूँ कि काफी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज भी बनाने की बातें कर रही हैं, जैसे कि एक्साइड है, अमर राजा है। तो कहीं ना कहीं देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पॉपुलेशन है वो अगले 5-10 साल में काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। और अगर आपको बेट ही करना है तो आप एंसिलरीज पे ऊपर बेट कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाने वाली है, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स बनाने वाले। जैसे टाटा पावर के आज नंबर्स आ गए तो टाटा पावर ने कहा है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ग्रीव्स कॉटन जैसी कंपनी तो है, लेकिन जो दूसरे जो एंसिलरी प्लेयर्स है जो ईवी को काफी बड़ी मात्रा में सप्लाई करते हैं,
उनके ऊपर भी फोकस करिए, लेकिन लंबा नजरिया रखिए, क्योंकि देखिए ये फील्ड में आपको जी। छोटा समय नहीं बट कम से कम 2-3 साल का दो नजरिया तीन दो तीन साल के 5 साल तक का समय रखें तो बहुत ही अच्छा है ई व्हीकल सेक्टर। आज वक्त खत्म हो रहा है। अविनाश, आप हमारे साथ मार्केट मंत्र में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Key domestic indices end flat in the second consecutive session. Asian and European markets decline amid weak global sentiments. And oil prices remain under pressure, slip further on concern over waning demand in the United States and China. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 6:30 p.m. Do join us then. Till then, from the entire team of Market Mantra, Namaskar. नमस्कार। Market Mantra.